Yes. एक सर हाँ. Yeah. Hello everyone and welcome back to Cricket Addictor's special match preview coverage for IPL 15. मेरे साथ जुड़े हुए हैं अशोक मल्होत्रा sir, the president of the ICA and a former Indian cricketer. Many thanks for joining us again, Ashok sir. Thank you very much, Eddie. Thanks very much. तो दोस्तों सुपर संडे डबल हेडर मैच नंबर 62 and 63 and next week से we will have the last 7 days of the group stage matches. तो अशोक सर पहला मैच जो है सीएसके और जीटी के बीच में टॉप ऑफ द टेबल बॉटम ऑफ द टेबल एक और पे सीएसके इज आउट एंड जीटी इज मोस्ट लाइकली क्वालिफाइड फॉर मे बी टॉप 2 पोजीशन. तो सर सीएसके के लिए पहले सर व्हाट वुड देयर ऑब्जेक्टिव बी फॉर टुडेज गेम? See, they कहते हैं ना कि पार्टी पोपर्स, if I may say, कि हमारे सर पे टोपी नहीं, किसी के सर पे रहने नहीं देनी. लगभग they are playing more for their pride, and not to forget, since Conway started firing, they're looking a different team altogether. And although last game Conway got LBW, unluckily could not take the DRS, but the fact is, if they get off to a good start, then they can challenge any team. So, but I still think Gujarat Titans will probably pull it through because they are a much stronger team, much better team, and the luck is riding on them. और वहीं सर बात करें गुजरात टाइटंस की, मतलब एकदम पोलर ऑपोजिट्स है. वन साइड इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, वन साइड इज रियली बॉसिंग इट. तो सर गुजरात टाइटंस के लिए व्हाट वुड देयर मेन ऑब्जेक्टिव बी? उनके लिए भी परफॉर्मेंस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश कि हम टॉप 2 में ही फिनिश करेंगे. बिल्कुल, they want to finish in the top 2 to qualify, and I think they will qualify because they have got a great bowling lineup, and with this Sai Kishore coming in along with Rashid Khan, they are a lethal combination. You know, I've been talking about Sai Kishore for a while, and I've seen him perform. And then you got Lockie Ferguson, you got Shami, you got Yash Tihal, who's a competent bowler. So they've got a very good bowling lineup. Batting is a little bit of iffy. If Riddhi and Shubman Gill get off to a good start, then they have the batting. But I still don't understand why did they drop Sai Sudarshan, because he is the one who was getting runs for them. And Hardik Pandya, after his first 2-3 knocks, he's struggling with the bat. He's not bowling much. He's struggling with the bat. He's just the captain, although he's captaining the side well. But somewhere along the line, his bat will have to do the talking. और सर हम एकदम स्विच गियर करें सीएसके पे. सर पूरा डिबैकल गेम था, पर एमएस धोनी सर स्टिल रिमेनिंग नॉट आउट एट 36 रन्स. मतलब अभी भी उनमें वो कंपोजर और वो रिस्पांसिबिलिटी एंड ऑल ऑफ दैट कैप्टन कूल है ना? Bilkul, definitely so, but now he can't win the matches on his own steam. He can play a little bit of a cameo once in a while. He's not a consistent cricketer now, and he's seen better days. Let's put it this way, because Mahendra Singh Dhoni fans will not be very happy the way we're talking. But the fact is, every cricketer has a shelf life, and I think Dhoni, I know, is still Paras Dhoni, is still can turn games around once in a while, but he is not consistent enough now. But still, Dhoni is Dhoni. और सर विकी सिंह ने पूछा है अबाउट द गुजरात टाइटंस स्किपर कि सर व्हाई इज ही नॉट बॉलिंग दीस डेज? लास्ट मैच में ही बोल्ड 1 ओवर, पर वो 2-3 ओवर प्रॉपर्ली बॉल नहीं कर पा रहे लास्ट फ्यू मैचेस में. तो सर क्या लग रहा है आपको इस पे? I think he is still injured. He's not fully fit. He bowled in the first 2-3 matches, and then once he had that niggle, he never came back. Whatever excuses he might be saying, I've got enough bowling lineup, I've got enough. But one thing हार्दिक को समझना होगा कि अगर वो bowling नहीं करते हैं तो भारतीय टीम में उनके लिए कोई जगह नहीं. मैं जानता हूं कि वो शायद कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं. I don't deny that, but जब तक bowling नहीं करेंगे, I don't think he can fit into the Indian team. And वो bowling क्यों नहीं कर रहे हैं ये तो हार्दिक पांड्या ही बता सकते हैं. But definitely कहते हैं ना, कहीं ना कहीं अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात कर रहे हैं. या तो वो फिट नहीं है या फिर वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट. और सर मतलब नाउ स्विचिंग फ्रॉम एमएसडी टू गुजरात विकेट कीपर बैट्समैन वृद्धमन साहा. सर जिस तरह की
फॉर्म उन्होंने पकड़ी है इस साल, दे ही रियली इज साइलेंसिंग हिज क्रिटिक्स. सर अच्छे प्रदर्शन किए हैं, 1 or 2 50s, एंड he has a very good 154 runs in the power play, sir, and not to forget his amazing glove work. And especially, sir, jab Rashid Khan was dismissing Avesh Khan, he was the only one who appealed for that. So, sir, is he one of the best wicket keepers, just pure wicket keepers in India right now? He's probably the best wicket keeper in the world. Why India? And Hmm. it's not us. It's everybody saying that. And we on our show we were talking that Ridhiman is a kind of an unsung hero. He goes under the radar because he Hmm. does his job and goes back home. Does not tom about it. And people have forgotten he's got 500s in Test cricket. He got 100 in IPL Hmm. finals, and people still forget. They don't rate him, and so much so that he has to say, okay, I'm also a good enough player in white ball cricket, because it Hmm. must be hurting him, performing Hmm. and still not being recognized as a white ball player, only as a test cricketer. So definitely, जब जब कोई नहीं बोलता तो आदमी को खुद अपनी अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ती है, अपने अपना बोलना पड़ता है कि भाई मेरे को भी नोटिस करो यार, भगवान के लिए मैं भी हूँ, मैं भी इस खेल Hmm. में हूँ. और सर हम गुजरात टाइटंस की ओवरऑल स्क्वाड देखे सर, लास्ट गेम में देयर वाज शुभमन वृद्धमन साहा, देन देयर वाज मैथ्यू वेड, फिर तिवातिया मिलर एंड द एंटायर स्क्वाड, सर साई किशोर हैड कम इन. आपको ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट गेम जो हमने गुजरात स्क्वाड देखी वो सेटल लग रही है, या आपको साई सुदर्शन एट नंबर 3 इंस्टेड ऑफ वेड और 1 or 2 चेंजेस हियर एंड देयर दिख रहे हैं अभी भी स्क्वाड में? See, I'm amazed at why Sai Sudarshan was dropped. He got a हम्म. 50, he got a 40, and then he got dropped. Initially, also, he got 28, 30, and then got dropped. I still don't know. That is a good youngster. You got to encourage a youngster. Matthew Wade has not been catching on. I understand you played Matthew Wade in the last game, but he is not clicking somehow. I understand he played well in T20 World Cup, but he's not clicking. I think you should look after a youngster. And a Sai Sudarshan for me, Sai Sudarshan for Matthew Wade should be in the side today. एंड सर लॉकी फर्गसन को अभी भी टीम में नहीं खिला रहे, एंड अल्जारी जोसेफ इज देयर सर. तो आपको, डू यू थिंक इफ यू वर इन गुजरात मैनेजमेंट यू वुड बैक अल्जारी जोसेफ और लॉकी फर्गसन फॉर दैट फॉरेनर स्पॉट? I'll back both of them. I think both of हम्म. them will play in the side. Alzari हम्म. Joseph and but in this business end of the tour, when balls might be turning a bit, then Sai Kishore should take place of Alzari Joseph. Lockie Ferguson, if he's not fit, maybe they're giving him a break. I don't know, but if he's fit, then he's an automatic. Shami and Lockie Ferguson are an automatic along with Yash Dya. और सर विकी सिंह ने पूछा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि प्लेयर के मेंटल पीस पे सर क्या इफेक्ट आते हैं, जैसे रिसेंटली राइडू का रिटायरमेंट सागा हैपेंड, सो व्हाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ फ्रॉम दिस एंड अदर थिंग्स सिमिलर टू दिस? देखिए जो आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट राइट इन चेन्नई सुपर किंग्स, डेफिनेटली नॉट राइट. समथिंग इज नॉट क्लिकिंग. महेंद्र सिंह धोनी वाज ऑल पावरफुल, लुक्स लाइक कि कहते हैं ना कि शेर थोड़ा बूढ़ा हो गया है, तो कहीं कहीं ना कहीं वो जो कंट्रोल था वो थोड़ा निकल गया. एंड बिकॉज एक बार आपने रिटायरमेंट कर दी, फिर आपने ट्वीट करके मना कर दिया, and then the CEO of CSK said, no, I talked to him and he will be available next year. But why would he retire? Although Raido has the habit of retiring number of times. He retired from first class cricket, then went and played first class cricket. So he normally eats his words. But the fact is, why would somebody retire when he's got only one format of the game he's playing? और सर बात करें सीधा राइडू से रॉबिन उतप्पा सर, ही स्टार्टेड ऑफ द सीजन वेरी वेल, वो आरसीबी के अगेंस्ट इनिंग्स और ही हैड 250s इन द बिगनिंग, पर सर तब से उनका एवरेज थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रही इतने हैजंट बीन अप टू द मार्क एज द बिगनिंग ऑफ द सीजन. तो क्या लग रहा है सर, अभी लय पकड़ पाएंगे इन प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट सीजन आल्सो? Yeah, definitely he has to. I understand because he's a good enough player. The way he started, I'm sure there are still 2 games to go. You might see Robin Uthappa at his best because he's got a very good number 3, which is a good enough number for him. So if he bats well at number 3, then things can turn in his favor. Because otherwise, CSK is going to make a new team next year. So maybe Robin Uthappa might not find a place. और सर कुमार प्रमोद ने बोला है कि क्या एमएसडी 2022 या 2023 या 2024 आईपीएल में रहेंगे?
कहते हैं ना, यू नेवर से नेवर विद धोनी। हम्म मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया है, क्योंकि अभी फिर वो वापस कप्तान है। तो हो सकता है यू माइट सी हिम इन 2023-24 also, but I think he should go. You should go when people say why you going, not when people start saying why you are not going. So I think ये परेशानी भारतीय ग्रेड्स की है, जो इंडियन ग्रेड्स हैं, उनको you have to push them out. They never go out on their own. So हम्म MSD seems to be one more candidate in that position, and he's a great player. He's a great servant for the Indian team, but his shelf life is gone basically. He can play one more year. He can play maybe 10 more हम्म years. Who am I to say anything? But I think हम्म you should go when people ask why you going, not when why you are not going. और सर एक पॉजिटिव हम निकाले फ्रॉम सीएसके लास्ट गेम सर, द ओपनिंग स्पेल्स फ्रॉम मुकेश चौधरी और सिमरजीत सिंह थोड़े लेट आए थे मुकेश चौधरी से, बट सर उनके 8 ओवर में दे हैड अंडर 6 इकोनॉमी एंड 4 विकेट अटकाए थे, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे हैड रिस्ट्रिक्टेड एमआई फॉर 33 फॉर 4। अगर 150 160 सीएसके का स्कोर होता, देन दे रियली वुड हैव गिवन देयर साइड अ कंपेटिटिव एज। और स्टीफन फ्लेमिंग, एमएस धोनी ने भी बहुत कॉम्प्लीमेंट किया इन दोनों यंग सीमर्स को। तो सर अगले साल दीपक चहर वापस आएंगे, एंड देन रविंद्र जडेजा विल मोस्ट लाइकली बी फिट एंड कॉनवे आर टॉप। तो सर नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे लग रही है आपको सीएसके की स्क्वाड? देखिए, सीएसके की नेक्स्ट ईयर ये देखना होगा, क्या वो राइडू को खिलाएंगे, क्या रॉबिन उतप्पा को खिलाएंगे, क्या जडेजा को खिलाएंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो देखने वाली बात है। क्या एमएसटी एक और सीजन खेलेंगे, ये कुछ ऐसे सवाल है, क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ द साइड चेंज हो जाएगा। फिर आपको नए लड़के खोजने पड़ेंगे, नए यंगस्टर खोजने पड़ेंगे, नए इंडियन खिलाड़ी खोजने पड़ेंगे, और आप बाकी टीमें मोर और लेस सेटल्ड हैं। तो क्या वो लड़के छोड़ के इस तरफ आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि सिमरजीत एंड Manish has been a good find. They can be, like शार्दुल ठाकुर की कम से कम कमी खत्म की है, और even दीपक चहर की for this year. Although Deepak Chahar is indispensable for CSK the way he picks up early wickets, but Manish and Simarjeet has a pace 140 plus he bowls. So definitely they must have ticked them for the future, and not to forget CSK backed Manish all the way. Even when he was going for runs, they still backed. और सर हम बात करें वानखेड़े पे जो डे गेम होने जा रहा है, एंड लास्ट वीक एट सीन वानखेड़े के डे गेम्स में पहले फर्स्ट इनिंग स्कोर में काफी ज्यादा स्कोर हमने देखा 190 प्लस। तो क्या लग रहा है सर, यू थिंक इट बी हाई स्कोरिंग अफेयर? It will be, because Wankhede ball comes out to the bat. It's easy to play your shots, and boundaries are a bit smaller. So definitely 180 plus, you can understand whosoever bats first. If you score 150, 160, you have lost the game. As far as I'm concerned, you're out of the game. So definitely the side which bats first should get at least 180. और सर हम बस एक बार राशिद खान पे बात करें सर, लास्ट 2 गेम्स में 6 विकेट्स, लास्ट टाइम 4 विकेट्स। तो सर एकदम वो अपने विकेट टेकिंग डेडली स्पिन में, वेरी गुड टाइम फॉर हिम टू कम इनटू दैट नाउ दैट गुजरात टाइटन आर अप्रोचिंग प्लेऑफ्स। See, last match में 4 wicket, Rashid, why he got? Because Sai Kishore was putting pressure from the other end. He has also bowled 2 overs, 7 runs and 2 wickets. यस So, सर। so he is putting pressure from the other end. Up till now, Rashid was the only spinner, and people are playing him defensively. That is why he was not picking up wickets. But now, when the pressure mounts from both ends, then you have to take chances. Then you have to take Rashid Khan on. That is what he likes, and that is when he picks up wickets. That is why he got so many wickets in the last 2 games. और सर कुमार प्रमोद जी ने पूछा है कि सर इस आईपीएल में सुरेश रैना की जितनी जरूरी महसूस करती होगी, जब जब सुरेश रैना नहीं खेले तब तब सीएसके एलिमिनेट हो गई थी। अब बिल्कुल, अब देखिए, सुरेश रैना की कमी जरूर शायद सीएसके को खली, बट सुरेश रैना ने लास्ट ईयर कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। शॉर्ट पिच बॉलिंग उनकी प्रॉब्लम हो गई है। ही इज आल्सो सीन बेटर डेज। वैसे भी अब कमेंट्री में आ गए हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि उनका खेलने की संभावना है। बिल्कुल सीएसके का हो, ही माइट हैव बीन अ लकी मैस्कट, बट आई थिंक सीएसके विल हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट अदर पीपल टू बिल्ड अ साइड। और सर अगर लकी मैस्कट हैं सुरेश रैना, तो किसी और कैपेसिटी में सीएसके ला पाएंगे सुरेश रैना को? डू यू सी दैट पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर? See the way he was sacked, controversially, or he was removed controversially. I think
that broke the bond which they had. That Hmm. broke the bond between MST and Raina. And MST, whatever he says, goes in the CSK. And I think he probably is not keen on Suresh Raina. That is why you will not Hmm. see Suresh Raina, uh, at least very soon, in CSK. And finally, sir, predictions क्या लग रहा है? CSK party pooping या गुजरात on 20 points? See, I would say Gujarat, the way they've been playing, and with the Sai Kishore coming in, they strengthen their bowling. If Alzari Joseph doesn't play, then Lockie Ferguson plays. So now they got good five bowlers, and not to forget the openers. Shubman and Gill has started scoring runs. Riddhi is doing well. Only Sai Sudarshan, if they can change him, he can give them that solidity. And then Hardik Pandya will have to come good. David Miller is doing a good job. Tewatia Hmm. is doing a good job. They're a bit brittle in the middle order still. But the fact is, if they get off to a good start, I think it's a game set and match to Gujarat Titans. Yes, definitely, sir. Now coming to the evening game, LSG RR. तो सर let's just start off. Brabon में हो रहा है. तो ये कितना important game है सर दोनों के लिए for that second for top two finish के लिए क्योंकि RR is on 14 points with RCB पर RR has two more games और LSG अभी 16 पे है तो कितना important है sir for both of them to establish dominance in this game? See, both of them would like to finish in the top two. LSG is much closer. They still got two games to go. They are on 16 points. If they win one game, they'll go to 18. And whereas RR is on 14 points, they need to win at least one out of the two games. And they seem to be struggling. The batting is too dependent on Josh Butler. That has been their undoing. Sanju Samson, as I've been saying all along, consistently inconsistent, has always been. And not to forget, Yashasvi, after playing a brilliant knock of 68, has again gone back to his own ways. Particle is a good player. Then they're missing Chevron Hetmar. Dusen is not an ideal replacement for him. If Hetmar comes back, they have a chance. Because for me, Butler and Hetmar are ek or ek 11. Those were the two pillars on whom Hmm. the entire Rajasthan Royals depended on. But Hetmar not being there has left a very big hole. They've got a good bowling attack, but I think they need to put runs on the board, and they hope and pray that Butler plays another Hmm. good two games to make sure that they are in the playoffs. और सर ये तो आपने एकदम सही बात बोली दैट बटलर एंड हेटमायर बहुत ही डिपेंडेंट है उन पे बैटिंग के लिए बट सर ओवरऑल बैटिंग ऑर्डर जिस तरह हमने दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट देखा अश्विन एट नंबर 3 आई मीन वी कांट से एनीथिंग बैड अबाउट अभी क्योंकि 50 रन मारे थे सर बट मतलब सेंडिंग वैंडर डूसन आफ्टर रियन परग सर वाज दैट द बेस्ट कॉल No, I don't think it was the right choice, but because he got a 50, you can say, but he slowed down the run rate. If say Sanju Samson would have got a 50, he would have got a 50 in 35, 40 balls, 35 balls. So, and he could have accelerated them. He could have, might have gone and got 100. Ashwin did try, but okay, at number 3, but why? Why would I send him number 3 when you got Devdutt Patikal, you got Sanju Samson, you got Van Dusen? Why would I send Ashwin, who's batting 7 or 8? And so I was amazed. Although 50-50 is a 50, but did it help Rajasthan Royals? No. So somewhere along that, the era of pinch hitters are gone. When you got so many batters in your ranks, why would I go for a pinch hitter? So I don't know whose idea was it Kumar Sangakkara, was it Sanju Samson, whosoever idea was, it did not click. He got a 50, but it didn't help Rajasthan Royals. और सर हम एकदम बात करें एलएसजी पे सर काफी डिबैकल हुआ था लास्ट गेम उनके साथ एंड सर मोस्ट लाइकली हमने देखा है कि जब क्विंटन नहीं चल रहे तो राहुल चल रहे हैं और राहुल बहुत बढ़िया लय में चल रहे हैं ही सेकंड इन द ऑरेंज कैप और जब राहुल नहीं चल रहे देन क्विंटन इज एबल टू रैक अप 50 पर सर जब दोनों ओपनर्स नहीं चले तो सर काफी डिबैकल हो जाता है बैटिंग लाइनअप पे तो गुजरात डू यू थिंक एलएसजी भी काफी डिपेंडेंट है अपने ओपनिंग पार्टनरशिप They are dependent on these two because KL has been so consistent. Quinton chips in with few, although they have got good batters in them. They have they have got uh, they got Stoinis, they got Ayush Badani, they've got Deepak Huda. So they had Jason Holder, Kunal Pandya. They have got all rounders, genuine batters
they are lacking. If Hmm. you say the top two, they are the genuine batters. After that, if you can see a genuine batter, maybe Deepak Huda. Others are Hmm. all rounders. Be it Kunal Pandya, be it Jason Holder, be it Stoinis. They all are, and so that is what they're lacking. And they're all good strikers when the going is good. When the going gets tough, then they find it tough to get going. So that has been the undoing for लखनऊ सुपर जायंट्स बिकॉज अगर दो शुरू में 10 for 2 हो जाए 20 for 2 हो जाए फिर उनको नहीं पता कि कैसे बिल्ड करनी है इन्हें कंसोलिडेट कैसे Hmm. करना है दैट इज देयर प्रॉब्लम और सर हम बात करें देवदत्त पाटिकल पे सर हिज 2 सीजन इन आरसीबी सर 400 प्लस रन रजिस्टर्ड किए हैं एज एन ओपनर पर सर अब मिडिल ऑर्डर में भी अब ठीक ठाक प्रदर्शन करें 3 मैच मिडिल ऑर्डर में खेले 120 रन और एन एवरेज ऑफ 40 तो आपको लग रहा है कि वो मिडिल ऑर्डर में भी डेवलप कर रहे हैं अच्छी तरह See, I think since if you want to open with Yashasvi Jaiswal, because Yashasvi cannot bat any other number, so then हम्म Padikkal has to bat at number three. So that is the right number for him, and he's doing well. I would not send Padikkal at 4. I'll send him at 3. That is the number he likes because if early wickets fall, then you got a regular opener to go and consolidate, and he can build an inning. I think he's doing a good job for them. He seems to be a good plus for Rajasthan Royals. और सर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स के एक चेंज पे सर रवि बिश्नोई कमिंग आउट फॉर करण शर्मा पर और करण शर्मा छाप नहीं छोड़ पाए सिर्फ 4 रन तो क्या लग रहा है सर करण शर्मा को दोबारा बैक करेंगे या रवि बिश्नोई की वापसी देख सकते हैं टीम में नहीं नहीं बिल्कुल रवि बिश्नोई मेरे को अभी तक नहीं समझ आया कि क्यों नहीं खिलाया रवि बिश्नोई क्या वो हम्म इंजर्ड था क्या उसको ब्रेक दे रहे थे बिकॉज रवि बिश्नोई के बिना देर हाफ द साइड देर bowling I understand because now the spinners are going to be very very handy. Kunal Pandya and Ravi Bishnoi are the real guys who bowl those 8 overs because I know you have got Chamira, you got Avesh Khan, you got Mohsin Khan, you got very good bowling attack, but now it will be on the spinners. You'll be depending on spinners. So I think you will see Ravi Bishnoi back. And Karan Sharma, I don't think whether he fits in into T20 cricket or not. और सर आपको क्या लग रहा है कि केएल राहुल वर्सेस ट्रेंट बोल्ट में हु विल कम आउट ऑन टॉप क्योंकि लास्ट टाइम तो ट्रेंट बोल्ट की इनकमिंग से केएल राहुल एकदम क्लीन अप हो गए थे क्या लग रहा है सर आज Dekhe, you might see Trent Bolt going round the wicket once again because हम्म Rahul has that shortcomings when the ball comes in rapidly. Probably it is not as bad as Aaron Finch, but he has that little bit of shortcoming. But if he gets through those 3 overs, then you know what Rahul can do. So हम्म it's a challenge for him because he wants to prove a point. It was a once and it will not happen again. And once you get out on that, then you are very very careful. So I see him going through that and scoring big once again because he is हम्म really go to man. He's probably the best batter in IPL in last 4 5 years. और सर हम एलएसजी का लास्ट मैच देखें तो उनकी बॉलिंग प्रदर्शन इतनी बुरी भी नहीं थी दे हैड रिस्ट्रिक्टेड गुजरात टू 144 तो आर्गुबली होल्डर के बजाय एवरीवन एल्स हैड अ प्रीटी गुड इकोनॉमी और राजस्थान लास्ट टाइम चहल वेंट फॉर प्लेंटी मनी बट दे आल्सो हैव वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग यूनिट्स इन द टूर्नामेंट तो सर आपको लग रहा है कि दिस इज आल्सो अ मैचअप बिटवीन दो सबसे बेहतरीन बॉलिंग यूनिट्स इन द टूर्नामेंट Yeah, can be. But Rajasthan Royals, people seem to be going after Yajuvinder Chahal. They seem to be going after Ashwin, who's bowling more leg spinners than off spinners. But still they are very very effective. Those 8 overs, they turn the tide in favor of whichever team. Those 8 overs are going to be very very crucial. And so if Chahal can pick up wickets, Ashwin can check the flow of runs, then I think those 8 overs can turn the game in favor. But because uh, first 3 overs of Trent Bolt will be vital, and then Prasid Krishna can bowl well. So they have a good bowling attack, but still the onus will lie on Chahal and Ashwin. और सर फाइनली क्या लग रहा है सम की प्लेयर्स फ्रॉम राजस्थान एंड लखनऊ फॉर टुडे See, when it comes to Rajasthan, I'll go with Josh Butler, sure. Because that's a norm. I'll go with then maybe I'll again go with Yajuvinder Chahal. Although he went for very many in the last game, but I'll still go for it. And when you talk about LSG, surely KL will be there surely, and then
then I might go with Mohsin Khan. Mohsin Khan, the way he's been bowling, is bowling very, very economically. First up and then in the slot. He's been pick of the bowlers so far. I know Avesh Khan is bowling beautifully as well, but Mohsin, Hmm. the kind of bounce and movement he's generating is unbelievable. और सर हमने लास्ट गेम जो देखा था ब्रैबर्न स्टेडियम में बिटवीन पंजाब एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, वहां द टीम बैटिंग फर्स्ट ने काफी बड़ा स्कोर पोस्ट किया था 209। तो आपको क्या लग रहा है सर, दैट बैटिंग टीम या चेजिंग टीम किसका एडवांटेज लग रहा है आज? See, maybe chasing because due is a major factor still. It's not as effective, but it's still a factor. So I think the whichever side wins the toss will probably like to field. Rajasthan Royals, although I think they are a good batting side first, than a chasing side, but I would still expect because they lost the last game batting first, so they might go for Hmm. the fielding as well. So I think the side whichever wins the toss will field in this game. एंड फाइनली सर, लखनऊ एंड राजस्थान दोनों आर कमिंग ऑफ अ लॉस, तो आज क्या लग रहा है सर, हु विल गेट दैट क्रूशियल विन? I somehow has my money on Lucknow because I see them batting better. They have a better equipped side, and their bowling has been phenomenal to say the least now with Mohsin and Avesh and Jamira. They all chipping in, and then Ravi Bishnoi and Kunal Pandya. So if the openers get going, then I think it is only one team which is going to win this Lucknow Super Giants. And when you talk about Rajasthan Royals, Joe's Butler, if he fires, then they can win. Otherwise, no chance. Okay, and thank you, sir. With that, guys, we are concluding our match preview for Super Sunday's doubleheader. Many thanks, Ashok, sir, for the great insights. Thank you everyone for Thank the you very questions, much. and Thank we you. will see you guys tomorrow.